Yes, we are finally back after a long time. मैंने थोड़ा सा हेयर कट लिया है, if you can see, और थोड़ा सा रूम में भी चेंजेस आए हैं. So this video is about the compounding effect. The compounding effect refers to the phenomena of an asset growing in the value over time as a result of the return it generates being reinvested. Now what does that mean? Let's suppose कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए at a rate of 10% annual return. तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके वो 100 रुपये 110 रुपये हो चुके होंगे. नाउ वो 10 रुपये भी अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो 10 रुपये आपको अगेन 10% एनुअल रिटर्न देंगे. दैट मीन्स यू विल एंड अप विद 111. So that's how compounding works basically. But today we are not talking about money. Today we are talking about how we can apply this growth and compounding mindset in our daily lives and make ourselves better. Okay, so let's start. So step 1 to apply compounding effect on your lives is make habit of making a habit. तो आपने पहले ही सुना होगा it takes about 21 days to apply any habit to yourself. So we are gonna put that to action. Okay, so I think this quote is from a man named Iman on internet. I used to watch a long time back. So the point he was trying to make is कि आपको इतना ज़्यादा काम करना है किसी भी एक आदत पे कि that it becomes more difficult not to do the thing than it is to actually do the thing. What do I mean by that? Suppose you don't like push-ups. Nobody does actually. But आपको उसे इतनी बार रिपीट करना है कि that it becomes more difficult to not to do the push-up than it is to do the push-up. The second thing is make your goals स्मॉलर. जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने भी ऑब्वियसली ये चीज़ ट्राई की है और ओवर द टाइम मैंने एक ही चीज़ सीखी है दैट कीपिंग योर एक्सपेक्टेशंस हाई makes it very difficult to start. So let's take the example of basketball. Let's say you need to practice 3-pointers. There are two methods for that. एक तो you can directly practice 3-pointers for years and years and years straight. Eventually you'll get good at it. This is a pretty good method and this work. पर इससे आपका motivation काफ़ी down होगा क्योंकि शुरू में आपके 3-pointers नहीं जाने वाले. I think if you are not a prodigy like Stephen Curry is, but if you start close to the net and take one step back at a time, that can actually lead to scoring 3-pointers in the long run and keeping your motivation intact while doing that. So step 3 is eat the frog method. So this method is actually pretty obvious I guess, क्योंकि अगर आपको वर्कआउट करना बिल्कुल पसंद नहीं है then do that thing first thing in the morning, जिससे पूरे दिन आपका मूड अच्छा रहे. अगर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं है then train your skills first thing in the morning. अगर आपको स्टडी पसंद नहीं है then train yourself first thing in the morning. इससे सबसे पहले सबकॉन्शियसली वो आपको इफेक्ट करेगा और आपको पूरे दिन में आइडियाज़ भी आते रहेंगे लाइक आई टॉक्ड अबाउट इन माई प्रीवियस वीडियोज़. बट अनदर थिंग इज़ दैट ये आपका पूरे दिन में मूड कूल रखेगा क्योंकि आपने सुबह सुबह अपना काम ख़त्म कर लिया है जो कि अब आपको पूरे दिन नहीं करना है. This brings a sense of confidence and motivation that you're doing something that others don't and can't. And step 4 is believe in the process. तो इस पूरी प्रोसेस में आई बिलीव कि इसमें टाइम लगने वाला है. येस, लाइक इट्स हार्ड टू सी रिजल्ट्स विद योर ओन आइज बिकॉज यू आर वॉचिंग योर सेल्फ एवरी डे. पर अगर आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इवन 2 or 3 months of training can bring drastic changes to your life. And this is how the compounding effect works. Actually अगर आपको कोई भी बड़ा चेंज लाना है अपनी लाइफ में then the process takes time. आप एक दिन जिम जाके अपनी बॉडी में चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप एक दिन ट्रेन करके अपनी स्किल्स में चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप एक दिन अच्छा खा के अपनी हेल्थ में चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी कंटिन्यूसली. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर हैबिट्स. एवरी टाइम यू ट्रेन, एवरी टाइम यू ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव दैट इम्पैक्ट्स योर लाइफ इन अ वे दैट चेंजेस योर माइंड सेट. एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हैं एंड आपके माइंडसेट में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है एंड यू आर अ बेटर पर्सन नाउ. सो व्हेन यू लुक बैक आफ्टर 2 or 3 years after training this mindset, you'll be a completely changed man and you'll be buying a copper color Bugatti, I guess. So every skill you possess that others can't have, that makes you a more valuable man in the long run, and that's how the compounding effect works.